Jai Ho. Om Guruve Namaha. Before we start to Virat Talks episode 4, day 2, I would like to request Pujya Guruvarya Shri Vaibhav Shiji Marasa to bless us with Mangalacharan. नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान के सद्गुण सबके जीवन में प्रकट हो, ये आशीर्वाद। और विराट टॉक्स के लिए विराट यूथ चरमंगल ग्रुप को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जो हमारे बीच दिलीप जी और शिल्पा जी आए हैं, उनकी क्वालिटीज को सब लोग जानेंगे, उनकी लाइफ जर्नी को सब लोग सुनेंगे और जो इस पूरे कार्यक्रम को बड़े शिद्दत से कर रहे हैं, अपना डेडिकेशन जिनका ग्रेट है, ऐसे सभी रिद्धि, पराग, तनवंगी, चंचल जी और सबसे बड़ी बात प्रागभा जी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और जितने भी आप लोगों ने गेस्ट स्पीकर्स बुलाए हैं, उन लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को शेयर करके सबकी जिंदगी को बहुत सुंदर राह दिखाई है, अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और कितने लकी है ये सारे बच्चे कि ये घर बैठे हुए कितने सारे काम कर पा रहे हैं और कितने सारे लोगों से मिल पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि टेक्नोलॉजी हमें हर जगह से जोड़ रही है। जय हो, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। Jai Ho, and thank you so much for so valuable blessings, Marasa. Thank you so much. So before moving forward, there are few announcements. Please switch off your audios and videos because it won't create any disturbance any longer. And for those who want to ask questions, may put their questions in the chat box. And also stay tuned for the feedback interview thing. You can be shortlisted for the feedback interview. Thank you. Now, hello and welcome everyone to Virat Talks episode 4, day 2. Virat Talks is created by Virat Youth Charammangal, envisioned by Sadhika Dr. Pragbhaji Virat. Here, we youth want to share the blessings through which is in the form of a knowledge to others as much as we can. So यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी eminent personalities आती हैं जो हमें अलग अलग बातें सिखाती हैं. But today, the most important topic is individual togetherness. ये दो शब्द ही अपने आप में इतने अलग है कि इन दोनों को साथ में बोलना भी एक बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है. बट यू नो व्हाट, आज के यूथ को ना वड़ा पाव के साथ जलेबी खाना बहुत पसंद आता है. ऐसे अजीब कॉम्बिनेशंस की ना हमको आदत है. सो वी लव इंडिविजुअल टुगेदरनेस. बट जब तक हम लोग किसी एग्जाम्पल को देखते नहीं, मात्र थ्योरी हमें समझ नहीं आती. वी वांट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो हमें साधिका डॉक्टर प्रागभाजी विराट ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस जीते जागते एग्जाम्पल्स के साथ बात करने का, उनसे मिलने का मौका दिया. जैसे आज के हमारे स्पीकर्स हैं Mr. Dilip Jain and Ms. Shilpa Jain. So इनके इंट्रोडक्शन के लिए I would like to invite Garima from Bangalore and Sayali from Bombay. Thank you. Thank you, Ridhidi. To start with, Pragbhaji, can I start? Yes, go ahead. Okay.
To start with, Mr. Dilip Jain is the youngest founding member of Himalayan Institute of Alternative Ladakh and has been a close associate of Mr. Sonam Wangchuk, the inspiration behind 3 Idiots since the beginning of Ice Stupa Artificial Glacier Project. Since last 3 years, he's worked closely with him to the conceptualization of Himalayan Institute of Alternative Ladakh. Also certified as a CA, Mr. Dilip Jain has worked in corporate sector for 7 years in senior management roles before he joined his family business and was instrumental in its five-fold growth to #1 position in the country. Parallelly, he co-founded the real estate company in JV with a PE fund and has completed 150 acres of project. A professional turned entrepreneur turned educationist. Mr. Dilip Jain interned at SECMOL, which is Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, during his MBA from SP Jain Institute in 2004. So basically, with adventure, sports, and trekking as his hobbies, Mr. Dilip Jain has launched Me Too Kids Adventure Club that provides exponential learning to kids by taking them closer to nature. He's a public speaker, TEDx, Spark Talks, etc., and has spoken on variety of topics. He's always on the path of learning, doing, and sharing. His latest dream, currently on the drawing board, is Vanbadi Forest Ecoversity, where people can learn everything related to ecology, nature, forest, farming, habitats, and various sustainable livelihoods. Their skills are learned practically and not just theoretically. So this perfect couple has only two things in common. So one is the designation, which is CA and MBA, and the other is their lovely son Meet. Except this, they are poles different in every manner, yet the very perfect couple. So let me hand over to Sreyali for the introduction of Mrs. Shilpa Jain. Thank you. Jai Ho. Shilpa Jain is finance wizard who by the doctors was declared 90% physically disabled. In spite that, she is leading a normal personal life, but is also very successful professionally. She is an excellent and effective communicator as well. Where normal people struggle to get one single degree, she has 5 degrees in the field of finance that are MCom into CA and has completed her MBA in Jamanalal Bajaj Institutes of Management Studies. She has a varied professional experience ranging from working in the IT sector to investment banking to managing the finance of a manufacturing company. Currently, she is working as the head of finance and strategy at Shantilal C. Mehta. In spite of having polio in her right limb, she lives a complete independent life. She can drive a car, two-wheeler, and many more things. She also loves to swim, walk freely without taking anyone's help. She has many interests like organizing events, driving, cooking, but one which is close to her heart is the Me Too Kids Club, which she runs with her husband. And the main purpose is to give the experiential learning to the children. On 22nd December 2019, Shilpa was facilitated by Rumba Devi of Badmer and Mangal Prabhat Lodhaji during the Rajasthan Carnival organized by Nari Shakti Nai Udan for disabling disability and striving to excel in all spheres of life. Thank you. Now I'd like to hand over to Tangmangi. Thank you so much, Sreyali. Now we begin the session with Mr. Dilip Jain and Shilpa ji. We'll start with the questions, sir. So the first question is to you, sir, Dilip sir. So question ये है कि सबके childhood में एक ऐसा point आता है where we change. एक छोटी सी चीज क्लिक कर जाती है. So we want to know a experience from your childhood जहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे आप इंस्पायर हुए और उस स्टोरी से शायद हम यूथ भी इंस्पायर हो पाए सर. ओके सो चाइल्डहुड का बात करें तो कोई एक स्टोरी बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस स्टोरीज थे जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ एंड स्पेशली मैं बॉर्न हुआ था राजस्थान में बिसलपुर में जो पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है जो एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 3 तरफ पहाड़ एक तरफ नदी है और बिकॉज वो पूरा नेचर से सराउंडेड जगह है. बचपन में हम क्या काम करते थे तो हम पेड़ पे चढ़ते थे, पानी में जाते थे, माउंटेन क्लाइंब करते थे, साइकिल करते थे
और बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स और वो स्पीशीज के बीच में रहते थे। तो बचपन में फ्रॉग्स पकड़े हुए, पिकॉक्स को पकड़ने की कोशिश की हुई है, मिट्टी के बॉल्स या लीफ की चटनी बना के लोगों को परेशान करने की कोशिश की हुई है, और ऐसे सब छोटे मोटे काम। प्लस हमारे यहाँ पे बहुत सारे डजनों बच्चे होते थे जिनके साथ हम खेलते थे। सो कभी ऐसा नहीं होता था कि अभी मुझे भूख लगा है या कुछ लग गया, अभी घर पे जाने का जरूरत है, पूरा दिन वो होता था। सिमिलरली जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए तो बॉम्बे में हम एक चौल में रहते थे जो खेतवाड़ी में है, एंड बिकॉज चौल सिस्टम था, नेबर्स के इधर आना जाना लगा हुआ रहता था, और गार्डन्स में हमारा आधा बचपन सिर्फ गार्डन्स में खेलते कूदते निकला है, और बहुत अच्छा बचपना रहा है। प्लस हमारे यहाँ पे गणपति के मंडल होते थे, तो वहां पे हम सर्विस या गणपति के टाइम पे जो वॉलंटियरिंग वर्क करना होता था उसके लिए हम जाते थे। तो ये सारे एनवायरनमेंट में जो बेसिक इन्फ्लुएंस हुए अर्ली चाइल्डहुड में, वो 3 थिंग्स के, एक तो नेचर से बहुत कनेक्ट रहा है हमेशा, दूसरा बिकॉज खेलना कूदना रिस्क लेना और इतने सारे ग्रुप के बच्चों में रहता था, तो थोड़ा एडवेंचर थोड़ा रिस्क लेने का एपेटाइट था, और तीसरा के ये वेदर गणपति हो या गांव में जब कोई फंक्शन होता था पोल्यूशन में, हम सर्विंग करने जाते थे खाने को, तो कम्युनिटी सर्विस का एक एलिमेंट हुआ। तो 3, नेचर, एडवेंचर एंड वॉलंटियरिंग, ये तीनों कहीं ना कहीं खून में बचपन से, आई वुड से कि दे वर पार्ट ऑफ माय अर्ली चाइल्डहुड, and I was lucky that I had all these things. And if we compare it with current children, especially in cities where they are into malls, mobiles and movies, and they don't have enough opportunities to go out, pick up adventure, go into the nature, which is really harmful. So I think in that way I was extremely lucky to be born in Bisalpur and having spent my early childhood with a lot of kids around. थैंक यू सो मच सर। आई ट्रूली अग्री विद यू। आजकल के बच्चों का जो नेचर से कनेक्ट है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज वी आर स्विचिंग टू मोबाइल्स एंड लॉट ऑफ डिवाइसेस. So it's great you learn so much from nature and you get connected again back to it. So the next question is related to you, Shilpa ji. Despite being differently abled, how did it affect your childhood? How did it shape you? आपके childhood में आपको क्या problems आई and how did you overcome those things? Because आज के youth में if you see normally छोटा सा भी खरोच लगती है, चोट लगती है, they make a really big deal out of it. तो आपने how did you cope up with it? See, I realized I was different quite early in my childhood, maybe when I was in grade 4 or something. But I did not realize that I had polio, which was uncurable. I always had that feeling that, I should be able to do things that kids of my age used to do, run around with my siblings, play with kids. So I was okay, but at the same time always used to pray to God, like कि मेरा पैर ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मैं सब लोग के साथ खेलूं कूदूं. But when I came to grade 8 and I studied about polio, that is the time I realized कि okay, polio is an uncurable disease and I have to live with that. Now that point in time I had 2 choices. One, to just accept it and deal with it and fight it and strive to live a life of dignity and respect, or the second choice was to live a life full of sympathy. मतलब तब तक ऐसा भी होता था कि people or my relatives or people used to come to my house and they were like, oh आपकी लड़की है उसको पोलियो है, जिंदगी भर एक आप पे अभी she'll become a liability for you. So that had somewhere already started hurting me, and when I realized कि boss this is there, then I have to accept it. So I made a choice कि okay, I have a polio, fair enough. Now how do I live my life with dignity and respect? When people come to my house, they should respect me. My parents should feel proud about me. They should never ever feel that I am a liability. So that's the point. I decided कि boss, I have to do something and become independent, be it financially, be it economically, and become a reason to be proud for my parents. Thank you so much, ma'am. That was a really nice answer. We got a lesson about dignity from you. और आज के youth को ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, including me. Next question आपकी तरफ है. आपने इतने सारे fields में shift किया, like corporate, CA, family business, and आपने final shift किया from economy to ecology. So वो journey कैसी थी, sir? And what was the reason that you shifted from ecology to economy? आपने इतना अच्छा career in the corporate field वो छोड़ के आप environment की तरफ बढ़ गए, and आप
हमारे आज के यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वी फाइंड आवर पैशन, हमें हमारा गोल मिल जाए एंड वी स्टिक टू इट? या सो जैसे मैंने बताया कि मेरा बचपना बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में रहा है, जहाँ पे पैसे का बहुत वैल्यू नहीं था. इट वाज ऑलवेज अबाउट डूइंग, प्लेइंग, वर्किंग. और जब 2 डिग्रीज आई और कंपनी का फ्लैट मिला नेपेंसी रोड पे, और सडनली बहुत इनकम चालू हुआ, तो ऑब्वियसली पैसे का फ्लो बढ़ा, और पैसे की जो माया रहती है वो ऑब्वियसली टच हुई. और उसी के साथ में शिल्पा वाज आल्सो अर्निंग. सो from being an average middle class, we were suddenly in a, I would say, higher middle class or even lower up, like I don't know, whatever it is. और with that economy thing, what I realized is कि जो बचपन में हमारा relations था, हमारे डिफरेंट लोगों के साथ संबंध थे, जिस तरह से हमारी लाइफ थी, वो काफी हैप्पी थी. ज्यादा पैसा आने से वो सारा चीज कम हो रहा था, कि पैसा तो एक साइड पे इकोनॉमिकली वी आर डूइंग वेल, बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर सफरिंग. So that was one realization that has come over the years, that while I may have started earning a lot, but on many fronts things were not going too well, and I thought money was one of the factors. And on the other side, when I started working with Sonam Wangchuk on the Ice project, I really understood that ecology is really getting hampered in a big way because of our economy and money making model, which is driving consumption and marketing. भले आपको 10वां जूता नहीं चाहिए, बट आपको कन्विंस किया जाता है कि आपको 15वां जूता चाहिए, आपको खरीदना चाहिए, और ये आप पे सूट करेगा. अभी वो जब होता है तो उससे ये होता है कि कोई ना कोई उसके कारण पेड़ कटेगा, नदी बिगड़ेगी, एनिमल्स मरेंगे इनडायरेक्टली, और इकोलॉजी पे बहुत हार्म हो रहा है. सो मैंने दोनों चीज देखा. एक पर्सनली देखा कि इकोनॉमी बढ़ने से हैप्पीनेस नहीं बढ़ा, और दूसरा ग्लोबली देख रहा हूँ कि इकोनॉमी बढ़ने से एनवायरनमेंट पे बहुत डैमेज हो रहा है. So at some stage I had to take that choice that okay, I need to take care of my family and their basic needs, but beyond that I don't need to earn this. Meaningless. It's better to do something which is more meaningful, and therefore I started this transition from economy to ecology. Of course, the journey has not been very easy, because when you make such choices, there are many issues within family, outside family, in the society. With 2 degrees where you can earn, I don't know, few lakhs or crores, you are earning not even basic things. So वो सारे challenges रहते हैं, but deeply देखे तो ये choice करने का जो ability आता है, ये सारी चीज समझने और देखने के बाद, वो काफी enhance हो गया. So I can make better choices now, knowing that how things function. Larger scheme of things में उसका impact क्या हो रहा है. As a CA I would look at balance sheet, personal wealth का balance sheet. अगर मैं life का balance sheet या planet का balance sheet बनाऊं, तो इकोलॉजी उतना ही important है. तो शायद मैं ज्यादा मैच्योर सीए बन गया हूँ इकोलॉजी के एंगल को देख के. So I think a lot of these things have shaped me, and now I'm very clear that education and economy, education and ecology are the things that I need to focus on. Economy is important for sustainable, which needs to be managed, but उसके लिए पूरा लाइफ जी जान लगा देना कोई मीनिंगफुल नहीं लगता. थैंक यू सो मच सर. आज मुझे मटेरियलिज्म पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला आपके थ्रू. सर इससे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आपने डिसाइड किया आप शिफ्ट करोगे फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोलॉजी, सो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? वो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या इतना अच्छा करियर छोड़ रहे हो तुम, और मतलब फैमिली ने क्या कहा आपको? Finally, family generally has been very supportive, whether it's my parents, whether it's my wife, whether it's my child. And also, having 2 degree and having worked in the business sector, luckily, and plus we don't have too much responsibility of looking after our relatives or parents, जहाँ पे बहुत खर्चा हो. So luckily we have been financially reasonably well off. And with that, I think protection, I'm in much better position to take those bets and those risks to be able to move this. बट यस, ये शिफ्ट जो भी किया उसमें ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक मन हुआ और शिफ्ट कर दिया. उसके लिए बहुत सारे साल का प्रिपरेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए. आपको सीए का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोड़ के आपको वाटर या एनिमल किंगडम के बारे में जानना, तो वो सीखना भी पड़ता है. तो वो ट्रांजिशन हैज बीन वेरी ग्रेजुअल. सो इट्स नॉट दैट आई स्विच्ड वन डे. I work with, and luckily I've always got good masters, good partners, and good colleagues who have supported me in whatever I did. So it has been a gradual, thoughtful decisions to do this shift, and I've always been very lucky to be supported by all who are surrounding me. So that's my good luck, I think.
थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ रियली नाइस आंसर। शिल्पा जी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। आजकल आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द यूथ, दे आर नॉट फोकस्ड, उनका नहीं है कि मींस दे आर फाइन कि एक डिग्री ले लिया, आई एम डन, मुझे जॉब मिल जाएगी, आई एम डन, बट यू had so many degrees. We saw it like CA, MCom and CS. So how did you manage to stay focused on like study and जो आसपास की चीजें होती है लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमना एंड अदर स्टफ, तो उन चीजों से कैसे आप अनअफेक्टेड रहे उन चीजों से, एंड हाउ कुड यू लाइक इतनी सारी डिग्रीज लेना एंड विद ऑल द पैशन, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? I would say, I was very clear. My focus was very clear. My whole idea, whole agenda was to earn respect for myself. When anybody is talking about Shilpa, they should speak anything except for disability. That was my only aim and only goal in life. And I come from a business background, business family. So taking MCom and doing CA was a very natural thing. And CA ke baad MCom and then MBA, and things just gradually fell in place. But the only thing what was driving me was create an independent identity for myself. When people talk about Shilpa, they should speak with respect. They should speak with dignity. That okay, she is there. Not just Shantibai's daughter or not just anybody's wife or the disabled who's living his life full of sympathy or something. But people should look up to me. That okay, she is also there. So that was my whole objective in life. I need to make a independent identity for myself. Talking about today's youth, the problem is, lack of focus, thanks to the gadgets and thanks to the, limited time span and all of that. So as long as we are focused, I think you can achieve anything in life. थैंक यू सो मच मैम। मैम, इससे एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि जो यूथ इन डिग्रीज की तरफ लाइक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, सीए, एमकॉम और कॉमर्स फील्ड की डिग्रीज है लाइक सीएस, सो आपकी एडवाइस क्या होगी उन यूथ के लिए जो इस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं? See, first thing is don't do it because somebody else is doing it. Do it only because you want to do it. And as they say, follow your passion. My passion was always numbers. My strength was numbers, or I could understand business better. I come from a family where I don't need to work, be it my father or my husband or whatever. But as I said, I was always very keen on doing something in life. So that's why I was, following my passion कि okay, मुझे कुछ लाइफ में करना है, मुझे बिजनेस मैनेज करना है. So अभी बिजनेस मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? So okay, I need the understanding of finance, I need the understanding of management, and that's how I decided, okay, after CA I would do MBA and stuff like that. So only advice I would do, whatever you want to do it with passion. Those things where your interest lies, rather than just copying okay, CA करने से बहुत fat salary मिलता है, but at the end of the day if you are not happy, you'll never be happy with that 5-figure 7-figure salary also. So follow your passion, I would say. Thank you so much, ma'am. Because आज most of the youth are doing most major degrees इसलिए कर रहे हैं because parents उनको pressure करते हैं और peer pressure. So that's a really nice advice for us youth. So अभी हम थोड़ा सा question answer से break लेते हैं and we have a fun game lined up and Riddhi will take over for the game. Riddhi. Yeah. Thank you so much, Tanvangi. Jai ho and hello. So this is a game. यहाँ पे ना एक थोड़ा सा I'll just give you the glimpse कि exactly करना क्या है. You both have to close your eyes, okay? And I'll ask the question. And अगर आपको लगता है कि वो चीज आप करते हो तो point it towards yourself, point finger towards yourself, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वो चीज करता है तो आपको उनकी तरफ फिंगर करना है, okay? So start करें? Okay. Yeah, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमको दिखाना बाद में. I'm sure most of the time it would be like this. Let's see, fingers crossed. So first, starting with closing your eyes and no cheating, okay? Okay. Okay, number 1, who is more funny? Okay. Who is a better cook? Who is more naughty or mischievous? Who says sorry after a fight? Oh. Okay. Who is more likely to forget the dates like anniversary, birthday? Who is more messy?
Who is more creative? Okay. Who is more lazy? Who is more likely to get irritated easier? Oh my god. I think I guess yeah, we are just ended up with the game, and you would love to watch the recording. I swear on that. That was so amazing, and thank you so much for such a beautiful game. And now moving forward with some more questions, I would like to pass the screen to Miss Tanvangi. Thank you. Much, Bhavan sir. It was a really great game. And since we had a game on couples, and अब थोड़े से questions related है marriage and couples से, so these questions are directed to both of you. So आप दोनों मिलके answer कर सकते हैं इसको. So पहला question है ma'am, answer. आजकल how can we decide who is the correct person to marry? और आप दोनों we would love to hear the story कि आप दोनों कैसे मिले and how did you manage to stay together, and as we heard your poles apart but you managed to stay together, and I'll make the next question afterwards. Just answer this one right now. Ladies first. I would say there is no right or wrong person, you cannot decide like that. I mean, if you ask me personally, till the time I met Dilip, I was very clear I don't want to get married. For the simple reason that I wanted somebody who would respect me as an individual, who would be considering me as a person without any baggage or anything. So I was very clear, but when I met him and I must have spent some time with him, and somewhere in my heart, I felt that no, this is the person with whom I would love to spend my life. So, you get that indication, maybe I don't know how, when, what, but when you meet that right person, you definitely get that indication. मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने का. बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश में चला जाता है बिकॉज दैट इज मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज, बट ठीक है. सो करेक्ट पर्सन, सही पर्सन मेरे हिसाब से वो है जो आपको रिस्पेक्ट करे और आपको अपना स्पेस दे. सो मैरिज इज लाइक पार्टनरशिप, 50-50 पार्टनरशिप. तो दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए. अगर ये पार्टनरशिप में कोई भी एक 10 है और दूसरा 90 है तो ना रिस्पेक्ट आ सकता है ना स्पेस दे सकते हैं. तो वो 50 एंड ईच पर्सन इज डिफरेंट. फॉर अस व्हाट इज द राइट बैलेंस, वी नीड टू गेट दैट राइट बैलेंस, एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट पार्टनर. बिकॉज जब वो रिलेशनशिप 50-50 पार्टनरशिप का नहीं है तो कोई ना कोई एक स्लेव बनता है, और जब कोई एक स्लेव बनता है तो रिलेशनशिप डूम होता है. बिकॉज कोई एक बड़ा होगा, कोई दूसरा छोटा होगा, कोई एक नौकर होगा, कोई दूसरा सेठ होगा. वैसा रिलेशनशिप हो जाए देन वो रिलेशनशिप इज डूम. सो आई थिंक दिस रिस्पेक्ट एंड space can only happen when there is near equality. Of course, you cannot get always exact 50-50, but near equality has to be there in various ways, whether it's education, whether it's income, whether it's way of thinking, whether it's approach to life. So I think because symbiotic relationship है ना, एक दूसरे पे dependent भी है but independent भी है, और जितना आप फायदा दे रहे हो उतना फायदा ले भी रहे. So win-win. While marriage is not a business, but somewhere those principles apply in some way. So I would say win-win हो वो relationship लंबा चलेगा. Win-lose या lose-win हो, it will not go. And therefore correct person is somebody who will be like balancing you or counter balancing you, वजन की तरह, तराजू की तरह. और दूसरा चीज है कि how do you manage to stay together. तो I think generally early in life attraction is for the external thing, whether it's body, whether it's wealth, whether it's clothes or money. But ये over a time dim होते जाएगा with age, and I think there is a lot of internal qualities that people have, and we need to start going beyond the external thing to look at the internal quality. And if we are able to do that, then I think the relationship can be much long lasting and not एक दिन ये आइसक्रीम पसंद आया, दूसरा दिन दूसरा फ्लेवर पसंद आया. But अगर internal depth में जाएंगे then I think it is much better. So that is my perspective on this. थैंक यू सो मच सर. बिकॉज आज का यूथ रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट से भागता है दूर, एंड दे आर लॉट ऑफ कंफ्यूज अबाउट इट. तो ये काफी अच्छा लेसन था हमारे लिए. तो इससे कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आज के सिनेरियो में, लाइक लव मैरिजेस आर नॉट लास्टिंग एंड इवन अरेंज्ड मैरिजेस आर नॉट लास्टिंग, द डिवोर्स रेट्स आर राइजिंग. सो व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट टू डू अ लव मैरिज और टू डू अ अरेंज्ड मैरिज? I would say anything is okay. For any relation or marriage or something, जैसे दिलीप ने कहा, giving space and trusting and respecting the other person is important. As long as you are doing that, you are giving that space,
you are getting that space, any relationship will work. So whether it is love marriage or arranged marriage, doesn't matter. According to me, I think love marriage is better because हम सब्जी या फ्रूट्स लेने जाते तो हम एक ग्रेप्स खा के देखते खट्टा है कि मीठा है, या कोई प्रोडक्ट अमेजन पे बाय करते तो उसका रिव्यू पढ़ते हैं. तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों में हम चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लाइफ अगर किसी के साथ बिताना है तो वो अरेंज कैसे हो सकता है. ऑफ कोर्स गारंटी दोनों में नहीं है, ब्रेकअप दोनों में हो सकता है, बट लव मैरिज में एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू and you are doing it with your choice, with your complete consciousness. Whether it will work or not depends on sacrifices and compromises, which is part of any relationship. But I would definitely think love marriage is the right way. Of course, arranged marriage में अपने culture में जो पहले parents करते तो in a way that was love marriage. So parents अगर कुछ arrange कर रहे हैं दूसरे को family के साथ में, they know each other, they know the culture, they know family. So in a way, it is love at parents level, I would say. But finally है तो love marriage. I would like, just add that as long as you're true to your own self and the other person, anything is okay. I mean, love marriage, arranged marriage doesn't matter. Thank you so much. मेरा concept काफी clear हो गया regarding marriage right now. Or you got more confused? No, ma'am, थोड़ा सा मतलब काफी clarity मिली मुझे अभी इस topic पे. क्योंकि काफी कंफ्यूजन चलता है फैमिलीज के अंदर, सो आई गॉट अ रियली ग्रेट क्लैरिटी ऑन इट. मैम एक नॉर्मल मींस अभी मेरा ये डाउट है, माय पर्सनल डाउट कि लाइक पीपल अट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंट पीपल अट्रैक्ट करते हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ आर यू एज अ कपल, हाउ डू यू मैनेज विद डिफरेंशिएशन एंड डाइवर्सिटी एंड स्टिल बी वन? This question you answer first. Yeah, okay, I can go. So, nobody is really perfect, neither me nor Shilpa. But I think when we combine together, we are almost perfect. We are as diverse as soil, मिट्टी और पानी की तरह है. तो एक मिट्टी है, दूसरा पानी है. दोनों में कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नहीं है, दोनों के नेचर अलग है, दोनों के बिहेवियर अलग है, दोनों के रोल अलग है, सब कुछ ही डिफरेंट है. पर नेचर में मैंने देखा जब मिट्टी और पानी मिलता है तभी पौधा उगता है. So that is how we are. While we may be very diverse, but when we get together, it makes magic. Obviously, with such diversity, it is very difficult to manage because we also have our ups and downs. But in that process, we learn to compromise, we learn to sacrifice, we learn to put our ego aside. But जो काम कर रहा है generally इसके at higher level, I think we are aligned. So while there are differences at individual level, at higher level we are aligned कि हम जो भी काम कर रहे हैं it should have impact, it should influence people, we should do good work, we should be example to people around us, we should live meaningful life. So वो दोनों पे हमारा alignment है. तरीका कैसा होगा, approach कैसा होगा, क्या style होगा, वो different है because दोनों के personalities, दोनों के upbringing, दोनों के backgrounds different है. But ऊपर के level पे alignment है. So I think yes, opposites attract. Of course, if there are too much opposite, it can burn also. But I think that right balance and correcting frequently and sensitizing, which is a never-ending process of life, I think. Yeah, that was from my side. Shilpa. Thank you. In continuation what Dilip said, I agree with him. We are like north and south poles apart, but at the same time we have a very, very strong bond thanks to our experiences and our journey, that we have a very strong bond that nobody can separate us. The most important thing which has held us together in spite of so much of differences, we try to give each other the maximum space, but at the same time we are always there when the other person needs us. That's the only thing which has kept us together and kept us going. थैंक यू सो मच मैम. जो कंसेप्ट आपने स्पेस का बताया, इट रियली स्ट्रक मी. मैं इस चीज को मतलब पूरी लाइफ भर याद रखूंगी, द कंसेप्ट ऑफ स्पेस इन अ रिलेशन. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्पेस को अगर और अच्छी तरह जस्ट वन सेकंड, स्पेस को और अच्छी तरह से समझना तो वेन डायग्राम होते हैं ना, दो सर्कल्स में कुछ पार्ट कॉमन होता है बट दो सर्कल्स ओवरलैप करते हैं. तो जो पार्ट कॉमन है वो आपका मैरिज लाइफ है, बट खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी, खुद का इंडिविजुअल एजेंडा, खुद का इंडिविजुअल चीज है. तो उस तरह से कुछ होना चाहिए रिलेशनशिप, इज व्हाट आई थिंक. थैंक यू सो मच सर. वेन डायग्राम से मेरा और क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू हैव अ किड, तो
आपके when you have a child, तो life में काफी changes आते हैं in a relationship, in your career. So what changes happened in your life because of your son Meet, and how did you manage in both areas? In relation में आप जैसे time नहीं दे पाते हैं, और in career someone has to leave their career, or sort of ये वाले changes, how did you manage through these? When my son was born, I took a sabbatical from my work. I mean, I was very clear that I don't want to sail in two boats. I mean, my simple thinking was that if I have brought a life into the world, it is my responsibility to bring that child with the right kind of values and systems, you know. So, till the time I got a comfort that he would be able to manage in my absence, I did not start work again. So till that time, for the first 8 years, I was the whole and soul focus for me, and Dilip was doing what he wanted, you know. So he was focusing on career, and family was secondary. Whereas for me, family was important and career was secondary. But then after 8 9 years, when I restarted work, for me, my career became focus first importance, and family became second. And then Dilip also changed his role. For him, currently, family is the prime thing, and for careers or whatever work he's doing gets a second importance. So, you know, over the period of time, we tried to balance each other's requirement, at the same time having not compromised with Meet or his upbringing. And if I may add, so yes, after the child is born, the focus is aligned to make sure that child gets the best opportunity for growth and evolution. और जैसे शिल्पा ने बताया कि जब शिल्पा का जरूरत था, मैं फोर्ट होल्ड कर रहा था एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. जब शिल्पा को अपना करियर पे फोकस करना है और मेरा इंटरेस्ट एनीवे एजुकेशन एनवायरनमेंट में है, तो वो काम में ऐसा है जो मेरे बच्चे को लेके मैं कर रहा हूँ. सो एनीवे उसका एजुकेशन और उसका अपब्रिंगिंग वो कंडीशन में हो रहा है. सो इट्स नॉट कि I am doing some work where he's not involved. In fact, he's one of the main reasons that I want to give a better future to him and children, where I'm trying to focus on education and environment as a cause. So I think we have adjusted, as per the requirements, and obviously our relationship has become a lot more soft and adjusting. Earlier, if we have a big difference, we would fight, but now we would try to resolve it, at least try to resolve it amicably, because that is essential for the child. And this whole even shift in decision of career and choices, that has only helped not me personally, but even as a family and to our child also. All of us have grown together. Thank you so much, sir. I really like the concept कि आपने according to the priorities at that moment you made the shift and you adjusted so well. So, sir, Plus next one question more is, thing. Yes, That sir. I can add is, I think early in life we have realized that we can't buy all the happiness for our child. Money can buy only so much. There is so much other thing that we can give him, be it experiences, be it exposure, be it love, be it so many other things जो जिसके लिए पैसा नहीं लगता है. तो हमने वो सारे देने की कोशिश की. पैसे का काम पैसा करता है, बट आजकल सेंटर है कि चाइल्ड को 10 गैजेट लाके दे दो और खुश हो जाएगा, वैसा नहीं होता है. एंड लकीली we were mature enough to give him everything which is required in a life beyond money. Thank you so much, sir. Sir, next question is related to you, directed to you, basically. So you worked with Sonam Wangchuk for a long time. And what has been your individual experience and what has been your greatest learning in that whole project? Yeah, so I know Sonam for almost now, I think 15 years, and while in the earlier 10, 12 years, I was not working with him, but last 3, 4 years, I was working almost full time with him. And working with a person like him, I think it gives a very different perspective. It is as good as, working with a Mara Sahib. आप अगर मारा साहब के साथ में 3 साल 5 साल बिताओ तो पूरे लाइफ का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए वही था कि सोनम के ये समझा कि लाइफ में लार्जर गोल होता है, लार्जर मीनिंग होता है, और सिर्फ लाइफ का मतलब कमाना, बच्चे पैदा करना और मरना नहीं है, बट बहुत कुछ और है उसमें. इनफैक्ट वन फॉर्मूला दैट आई डेवलप के व्हाटएवर इज योर एज, that much percentage of your time and effort should be given to a cause, and which is something that I derive from him. Second चीज तो मैंने उनसे सीखा कि altruism या selflessly किसी cause के लिए काम करना is very important, because जब वो selflessness होता है, आप unbiased होते हो, आप objective होते हो और आप ज्यादा committed होते हो.
प्लस उनके साथ काम करने से एजुकेशन और एनवायरमेंट फील्ड के चैलेंजेस क्या है वो समझ में, और वो समझने के बाद जो मैं करंट काम कर रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ. तो आई थिंक वो सारी समझ काफी आई है. प्लस ऑब्वियसली एक जो चीज उनसे सीखा है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा कार्य करना हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज को साथ में लाना होता है. पैसा हो, लोग हो, फंड्स हो, पीआर हो, तो वो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो भी मैंने सीखा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने सीखा है उनके साथ काम करने से इज हाउ टू लिव सिंपली. सो ही मे बी द बिगेस्ट known personality in the current times in the world, but उनके जेब में शायद 500 रुपए नहीं होंगे, वो जो कपड़े पहनते हैं वो 2 साल पुराने होंगे, because he thinks कि बस living simply is the most important thing. because आप जब physically simply live करते हो आप बड़े चीजें सोच सकते हो और कर सकते हो. So I think living simply, and plus it has huge positive impact on the environment. So these are some of the things which I have learned from him and I practice myself. So not learning कि मैंने सुन लिया, ताली बजाई, खुश हो गया, बट मैं उनके साथ काम किया वो सारी चीज पे और खुद अभी अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर, आपके थ्रू उनकी टीचिंग्स भी हम तक पहुंची. थैंक यू सो मच फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू शिल्पा जी. यू ड्राइव, यू स्विम, you trek. How is all that possible, and how do you perceive it? Means, what's your perspective towards it? See, my funda in life is very simple. Everything is a mind game. If you feel you are weak, you'll feel you are weak. If you feel you are strong, you will feel stronger. So, most important thing is accept your shortcomings, accept your failures, and then live with it. Once I decided, okay, my one leg is not working. Now, if I have to do things, I have only one leg which is working. So how do I do it? And then I just do it, Never ever that thought also comes to my mind, okay, will I be able to do it? Should I even try it? No, I believe in a very simple funda in life. Man ke haare haar gaye, man ke jeete jeet gaye. Thank you so much, ma'am. It's really, you are really inspiring us. आपकी एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है यहाँ पे. अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन से, and I'll invite Riddhi for a rapid fire session with both of you guys. Thank you so much, Tanvangi, again. So rapid fire के लिए I'll be asking a question जो आप एक एक करके दोनों ही आंसर देंगे, and we expect that question should be rapid and full of fire. So आग बंद नहीं करना है ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. So शुरुआत करें. Are you guys ready? Yeah. Okay. The first question is, how does your son see you? Role models. Mama can do anything. Wow, the best ever answer I've ever heard. Next question. Motivation for me is dash. Living life to the fullest. Impacting other people. Wow, great. Okay, who do you admire the most? Unfortunately, my husband. Many people, but I would say nature is the ultimate teacher. So everything in nature I admire to the fullest. Great. Okay, if ever your biopic is made, तो उसका नाम क्या होगा? The Mad Couple? No, definitely not this one. No, but MAD again, stands for Meet and Dilip. Meet is our And son's what name. about me? Mads. Nice. Okay, describe yourself in 3 words. Energetic, strong, independent. Perfect. Nature, adventure, volunteer. Wow, the ultimate one. Nice. What is the first thing that you notice about someone? जब आप उनसे मिलते हो, what is the first thing that you notice? Body language? Okay. Invisible character, जो दिखता नहीं है. Okay. The next question is, what is money for you? A tool to achieve something which is not more money, but something higher. It's a tool. Okay. It is something which is required for your basic necessity, but nothing beyond that. Okay, completely perspective changing answer, I must say. So moving forward, next question. Your message आपको इन following लोगों को एक लाइन में या जैसे भी आप comfortable है कुछ message देना है. First is your parents. Message, whatever it is.
Thanks for always being there for me and supporting me in whatever I wanted to do. And I am what I am. या मैं जो भी हूँ सिर्फ उनके बदौलत हूँ. So I think it's only because of their blessings and their upbringings that I am what I am. Okay. A couple. Keep fighting, keep growing. But also keep adjusting and keep sacrificing. Wow. Youth. Try to follow your passion. Okay. And commit to it, even if it means you have to go against the societal norms or family norms and you have to fight for it, then yes, do it. Early age में fight करने से ज़्यादा नुकसान ये कुछ हारने के लिए है नहीं ना आपके पास. True, very true indeed. Next is, what would be the piece of advice or message to your son in his early 20s? Don't be like your father. जी ले अपनी जिंदगी. Okay, oh my God. So now this is a question जहाँ पे आपको एक दूसरे की दो ऐसी आदतें बतानी जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, दो ऐसी आदतें बतानी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं अपने पार्टनर की. अच्छी में करना है तो करना है. Shilpa will have this attitude. She will do and die, but she'll just do it. Okay. दूसरा अच्छा में she is very assertive and authoritative. Okay. इसकी अच्छा है सोचनी पड़ेगी. No, he is very caring, very loving, and not only towards his family, but anybody and everybody who comes in contact with him, he would be most caring towards them. And second thing, he doesn't have any baggage with him. Normally we always carry some kind of baggage, be it our status, our finances, our qualification, or something like that. He doesn't ever have that baggage with him. That's something which I really appreciate about him. Okay, nice. Moving forward, I would like to see कि ऐसी कौन सी चीजें जो आप बचपन से करना चाहते थे and you finally got to do it like in recent years. मैं तो जो भी करना चाहता था सब किया और कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने 2 साल पहले मैं बच्चे के साथ स्केटिंग सीखा. लास्ट वीक में एक कोकोनट ट्री जैसा एक बड़ा पोल था उस पे चढ़ा लाइक अ मंकी. जो मेरा बच्चा नहीं चढ़ पाया 11 साल का, मैंने चढ़ लिया. So Oh my God. मतलब we do if everything I what want is to do something, I will do it. I will not wait for anything. Like करना है तो करना है. Wow, great. Lastly, एक थोड़ा सा ज्यादा वाला डिमांड है, लेकिन डिमांड है सबका कि आप दोनों को एक दूसरे को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना है या आप उनको डिस्क्राइब करें एक गाने के थ्रू. Such a difficult question, I see. It's really difficult यार. मतलब इसके बदले कुछ और नहीं चल सकता. गाना तो याद ही नहीं आएगा यार. नहीं मतलब this is a public demand. लोग चाहते हैं कि they want to know. I'll have to take the help of my son. He can help me. मेरा जीवन कोरा ही रह गया. Because I'm not lefty, I'm sitting right with you. No, but I have reached that position that I don't get influenced too much by things around. See, that's the reason I don't dedicate any song to him. Oh my God, the funniest ever rapid fire I can see. This तो सच में आग लग गई सच में. Thank you so much for being such a sport and thank you so much for giving me such a good rapid fire. Thank you and handing Most over to welcome. Tanvangi. Thank you so much, sir and ma'am. It was such a fun rapid fire. Sir, now a question directed to you. Could you explain the link between the 3 E's that we saw in your resume? The 3 E's and how it's important in one's life, how they are connected in one's life. Yeah, so the 3 model. So I think इसको हम different लोग different तरीके से बोल सकते हैं. I am calling it 3. So generally जो मैंने खुद के लाइफ में देखा है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा है एक्सपीरियंस और तीसरा है एक्सपोजर. तो आई कॉल दिस 3 एज एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर. और अगर ये तीनों में से एक पहिया अगर ठीक नहीं है तो आपका टेबल खड़ा नहीं रह सकता. सिंपल एग्जांपल दूं तो सपोज मेरे पास लॉ का डिग्री है
बहुत अच्छा डिग्री है, फर्स्ट रैंक हो गया, बट मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है लोगों से बात कैसे करना, ये एक्सपोजर नहीं है कि आर्ग्यूमेंट कैसे प्लेस करना, कैसे विड्रॉ करना, कब बोलना, कितना बोलना, तो सिर्फ डिग्री से मैं केस नहीं जीत सकता, बाकी 2 चीज की जरूरत है। सेकंड एक्सपीरियंस पे आएंगे, अगर मैं पॉटर हूँ जो मटके बना रहा हूँ बहुत सालों से, बहुत एक्सपीरियंस है, जनरेशन से मटके बना रहा हूँ, बट मेरे को एजुकेशन नहीं है अर्थ साइंस का कि अर्थ कैसे रिएक्ट करता है, पानी से कैसे रिएक्ट करता है, या मेरे को एक्सपोजर नहीं है कि पेरिस में या न्यू बॉम्बे में या दिल्ली में किस टाइप के मटके बिकते हैं, तो मैं कितना भी अच्छा पॉटर रहूंगा मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं बन सकता, बिकॉज ना मुझे साइंस पता है ना मुझे दुनिया के बारे में पता है। और तीसरा है एक्सपोजर, कि मैं रईस बाप की औलाद हूँ, एजुकेशन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट दुनिया भर घूम लिया, बहुत एक्सपोजर है, और खाली एक्सपोजर से भी कुछ काम नहीं चलता। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम, वेदर इट्स चिल्ड्रन और एडल्ट्स, वी नीड अ राइट बैलेंस ऑफ 3 थिंग्स। आज की तारीख में एजुकेशन बहुत हो गया है, मेंटली हमको सब कुछ ही पता है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट अगर हम जाके वो खुद खेती नहीं करते तो कितना भी आपको पता है फार्मिंग के बारे में, उसका यूज नहीं है, या अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो उसका फायदा नहीं। So I think a right balance between three E's will converts knowledge into wisdom, or wisdom is essential for growth. So I would say, that's like essential thing for growth in our life. Thank you so much, sir. Now I have a question directed to both of you. As you have changed a lot of formats in your own life, you came over all of your mistakes and everything. So, जो Jainism है, Jainism has अभी के time में, how do you think that we should change the format of Jainism so that we can reach out to more and more youth and they get to know the real essence of it? See, what I would say कि anything, कोई भी चीज है, change is the only constant, as they say, So whether it is religion, whether it is culture, whether it is a belief system or anything, everything needs to get evolved over the period of time, But at the same time, the fundamentals should remain the same. Now, for example, our religion, Jainism, is based on the principle of ahimsa. So it should be maintained, but the way it should be maintained will change over the period of time. I mean, earlier people used to say you should not walk on grass, The reason should be or might have been that we would have been hurting more insects because lack of electricity, lack of light. But now that will no longer hold true because we would have so much of light around. We would see what insects are there and maybe try and save them. But at the same time, now the principle should say, boss, when you're driving in a car or you're traveling in a car, that is more harmful because when you're driving, you don't know how many insects you're killing. So the fundamental belief of ahimsa is there, but the form in which it should be practiced should change. मेरा पर्सपेक्टिव दूं तो मैं लास्ट 7 साल से न्यू एक्रोपोलिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी फिलोसॉफी कल्चर के बारे में सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्लस सोनम के साथ काम करने के बाद बुद्धिज्म के बारे में भी बहुत डीपली समझ में आया। तो ये एक चीज है कि हमारा जैन रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत सॉलिड और बहुत अच्छे हैं, जैसे शिल्पा ने बताया अहिंसा, परमो धर्म या सत्य, ये 2 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है जितना मुझे पता है। मुझे लिमिटेड पता है बिकॉज मैं रिलीजन के रिचुअल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बट प्रिंसिपल्स में बहुत बिलीव करता हूँ और उसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अहिंसा परमो धर्म अगर रियली हमारा प्रिंसिपल है, और जैसे शिल्पा ने बताया हम आलू नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, वो सब अच्छा है, फॉलो भी करना चाहिए, बट आज की तारीख में जीव हिंसा ये सब चीजों से नहीं हो रही है, आलू खाने से नहीं हो रही है, बट हमारे लाइफस्टाइल और कंजम्पशन हैबिट से हो रही है। तो अगर हम अपना घर बनाने के लिए एक फॉरेस्ट पूरा तोड़ देते हैं और एक बड़ा बंगलो बनाते हैं जिसमें मार्बल लाके और सब एक्सोटिक फॉरेस्ट की चीजें लाके लगाते हैं, तो हम वो एक छोटा मच्छर नहीं मरे उसके लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, बट पूरा फॉरेस्ट तोड़ के हम अपना बंगलो या रेसिडेंशियल स्कीम बना रहे हैं। तो अहिंसा अगर प्रिंसिपल है तो कंजम्पशन हैज टू बी इन कंट्रोल, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर लोग कंज्यूम कर रहे, खर्चा कर रहे, चीजें नहीं ला रहे, खरीद रहे, बिगाड़ रहे, तो शायद जैन लोग का नाम सबसे आगे होगा, उनके पास पैसा है। तो वो कंजम्पशन ज्यादा होने से हम ज्यादा अहिंसा करें, वो इनडायरेक्ट अहिंसा है, वो डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मच्छर को नहीं मारा, बट एक प्लास्टिक का बोतल खरीदने से हमने 10 फिश को ओशन में मार दिया। तो ये इनडायरेक्ट जो कंजम्पशन के बिहेवियर्स है, इसको हमारे जैनिज्म प्रिंसिपल्स में हमको ऊपर लाने चाहिए कि अहिंसा
आज की तारीख में वो नहीं है जो हम 500 साल पहले जब रिचुअल्स स्क्रिप्चर्स लिखे थे तभी जो था वो है, बट आज की तारीख में सिचुएशंस डिफरेंट है। सो अहिंसा हम डिफरेंट तरीके से करें और वो हमको आगे लाने की जरूरत है। दूसरा जो सत्य या असत्य की बात है, तो अगेन बहुत सारे जैन लोग, इवन मैं बिजनेस में था, और अगर हम बिजनेस में है और अगर कोई करप्शन करता है कंट्री में तो जैन्स के नाम अगेन सबसे आगे आगे होते हैं। तो अगर हम कहीं करप्शन से अपना पैसा कमा रहे हैं और काम कर रहे हैं तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य का तो पूरा बैंड बजा रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं हम जैन हैं। तो क्या हम थोड़ा कम करप्शन या थोड़ा कम पैसा कमा के सत्य की जिंदगी जी सकते हैं? सो आई थिंक हमको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। रिचुअल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए या टाइम के लिए रेलेवेंट नहीं है उसको रीडिफाइन करके आज की टाइम्स में लाना चाहिए ताकि यूथ को कनेक्शन दिखे। नहीं तो यूथ को दिख रहा है कि यार मैं 1 घंटा सामायिक करो, उसका क्या फायदा? They get disconnected if they don't see connection between rituals and principles. And I would think doing that connection we need to really work on it. Buddhist लोग ये मामले में काफी आगे जा चुके हैं जहाँ पे वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल्स चेंज कर रहे हैं वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। हमारे में भी कुछ लोग कर रहे हैं जैसे कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बट बहुत सारे रिलीजन के लीडर्स है, दे आर स्टक विद देयर ओल्ड थॉट्स एंड मेथोलॉजी व्हिच आई थिंक नीड्स टू चेंज। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो आइडियोलॉजी है दैट रेजोनेट्स ट्रूली विद चरमंगल एक्चुअली सर। जो रिचुअल्स है उनका एक्चुअल मीनिंग, उनके पीछे के प्रिंसिपल्स समझाने पे प्रागबाजी एंड मारासा are doing their best. They're trying to reach as much as youth, and you can see how many youth we are connected to them because of their outlook on Jainism, a different outlook. Uh, Moving on to next question, sir. Sir, we want to know a little bit about your upcoming projects. Yeah. So after I stopped working along with Sonam Wangchuk around 1.5 2 years back, because I didn't want to go and settle in Ladakh, I started looking for a project near Bombay जहाँ पे जो भी मैंने बात किया है वो हम एक्चुअली कर सके। सो वनवाड़ी करके एक फॉरेस्ट है जो कुछ 2 डजन लोग ओन करते हैं, जिसमें मैंने अभी एक माइनॉरिटी स्टेक लिया है। और ये फॉरेस्ट को हम एक लर्निंग सेंटर की तरह बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग नेचर के हार्मनी में कैसे रह सके, कैसे जी सके, कैसे अपना घर बना सके, सारे बायोडाइवर्सिटी, सारे एनिमल्स को साथ में लेके कैसे सस्टेन कर सके, वो हम सिखाना चाहते हैं और खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज से लाइक कोरोना वायरस ने हमको दिखा दिया है और आगे दिखेगा कि एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी ऑन द प्लैनेट। हम कितना भी इकोनॉमी को बढ़ा दे, अगर एनवायरमेंट नहीं बचा, प्लैनेट नहीं बचा, तो इकोनॉमी को फायदा नहीं है। सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और हार्मनी विद नेचर जीना, टू लिव, टू ग्रो इन हार्मनी विद नेचर, टू कंस्ट्रक्ट इन हार्मनी विद नेचर, टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज देयर इज सो मच वी कैन लर्न। लास्ट 50 साल में वर्ल्ड के 50% एनिमल्स एंड बर्ड्स मर गए बिकॉज हमारे इकोनॉमी ने उनको मार दिया है। तो हमको एक ऐसा जगह बनाना है, ऐसा सेंटर बनाना है जहाँ पे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, नेचर की सीख दी जाए, का प्रैक्टिस किया जाए और उसके साथ कैसे जीना है वो बताया जाए। शायद ये 500 साल पहले होता था हमारे देश में, बट हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करके हम इस रास्ते पे आ गए जहाँ पे बहुत नुकसान हो गया। वी नीड टू गो बैक। अगर हम एक गलत रास्ते पे है तो सही रास्ते पे जाने के लिए अगर वापस पीछे जाना पड़े और सही रास्ता पकड़ना पड़े तो करना चाहिए। और हमारी कोशिश है वनवाड़ी फॉरेस्ट इकोवर्सिटी में कि हम ये पहल करें और इस पे चले। Thank you so much, sir. It's really great to know about your project. And the last question from my side, after this, I'll pass to Riddhi for audience questions. The last question from my side is, how did you feel to be connected to youth regarding Charammangal? And what are your views and what are your thoughts for us? So for me personally, I have always liked connecting with youth and inspiring them, telling about our story, our work, and how they can look at it. And I think Charammangalam ये जो youth को connect कर रहा है, उनको ये exposure their early age, it is really a commendable job because having the right role models early in life is very important. नहीं तो हम गलत role model को follow कर लो तो कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। So in that way, I think this initiative is very good, and I really thank you for taking this initiative.
Ma'am, your views? I mean, as Dilip said, it is really appreciative. Okay, you're taking so much of effort, and Sadhviji is doing. I mean, you all must be doing it pro bono, because doing such activities needs a lot of time, effort, and energy. And to keep the youth motivated and invest the time and energy, I mean, thank you, Sadhviji. Thank you very much for doing all of this. थैंक यू सो मच मैम। आज मैंने आपसे जब क्वेश्चन आंसर्स पूछे आप दोनों से, सो वो बचपन में एक हंगर रहती है एक छोटे बच्चे की कि मेरे क्वेश्चंस इतने सारे हैं। सो मेरे भी यही हंगर थी व्हेन आई स्टार्टेड विद दीस क्वेश्चंस अबाउट यू एंड योर लाइफ, योर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो वो जो भूख थी सर वो पूरी शांत हो चुकी है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू पास ऑन टू रिद्धि फॉर द ऑडियंस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच तनंगी अगेन। सो यहाँ ऑडियंस की जो भूख है वो थोड़ी सी बची ऐसा दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दे वांट टू नो कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, लेकिन जब इस ट्रस्ट को रिलेटेड कोई इशू हो जाता है तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। इसमें हमें चाहिए कि एक मेल जो होता है रिलेशनशिप में उसका ट्रस्ट को लेके क्या नजरिया है, एक फीमेल का क्या नजरिया है। Women are more tend to be possessive, ऐसा माना जाता है। So how everything is working, क्या ये मान्यता सही है? And how trust issues कैसे resolve किए जाए? See, trust issues will only come when you become possessive. When you become possessive, when you're insecure. And when you become insecure, because trust is not there. So when you start leaving, it's like a circle. So once you start trusting that person, you need to give them that space. You let them free, and that's how that trust also grows. So it's like a circle. You leave them, you let them be, and you trust them. So I would feel trust is not an independent thing. जब हम ट्रस्ट की बात करें हम एक्चुअली बहुत सारी चीजों की बात करें। उसमें रिस्पेक्ट आ गया, उसमें स्पेस आ गया, उसमें इमोशनल कनेक्शन आ गया, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। बिकॉज हमारा बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है ना, एनर्जी है, इमोशंस है, मेंटल है, आत्मा है, बुद्धि है, व्हाटएवर। सो ट्रस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। और अगर ये इक्वेशन कहीं पे भी हिलेगा तो ट्रस्ट पे इफेक्ट करेगा। सो आई थिंक हमारा जॉब जनरली एज अ कपल होना चाहिए कि वी हैव अ फेयर बैलेंस इन दैट इक्वेशन। और वो जब इक्वेशन में फेयर बैलेंस रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा। जब वो इक्वेशन वन साइडेड हो जाएगा या फेयर बैलेंस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ट्रस्ट डेफिसिट होगा। जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा, जो शिल्पा ने बोला, विशियस सर्कल में चला जाता है। वन विल लीड टू अनदर, अनदर विल, तो एक का 10, 10 का 100 होगा एंड थिंग्स विल कोलैप्स। बट रिवर्स इज आल्सो ट्रू। इफ द ट्रस्ट इज देयर देन पॉजिटिव साइड में भी एक का 10, 10 का 100 हो सकता है, और होता भी है। एंड आई थिंक अगेन बोथ हैव टू मेक दैट एफर्ट टू keep building on it, working on it. I think sacrifice and compromises again becomes the most important thing in any relationship for that matter. Yes, so true. And thank you so much. Like obviously this was a very vicious circle that ma'am told, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है ना, हम लोग मिस आउट कर जाते हैं कहीं ना कहीं, एंड ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं। एंड एक चीज होती है कि इस चीज को समझने के लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, जो बहुत लोगों में लैक कर जाते हैं। दे जस्ट हरी अप एंड लैंड अप समथिंग इनटू रॉन्ग एंड ऐसे कुछ। सो या अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। एंड मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियंस का ऐसा पूछना है कि जब एक कपल में फाइट होना, आई गेस दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग और ये होती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी किसी इंसान का टेम्पर बहुत हाई है, गुस्से में एकदम पीक पे चढ़ा हुआ है गुस्सा, मतलब जबरदस्त। तो उस पीक पे कभी कभी हम सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं, कुछ गहरे सम सॉर्ट ऑफ हर्ट दे जाते हैं। सो हाउ टू प्रिवेंट दैट, एंड उस मोमेंट पे चीजों को किस तरीके से संभाले, ये आपसे हम सुनना चाहेंगे। This Dilip does the best. Stop reacting. So coincidentally हम दोनों में जैसा हमारा ऑपोजिट कैरेक्टर है, शिल्पा इज लिटिल अग्रेसिव, असर्टिव, अथॉरिटेटिव, and I am a lot more calm. Of course we have changed over time, that is a separate matter. I am a lot more calm and chilled out. So जब ऐसा कुछ situation आता है, generally I would say 90% time, if Shilpa gets really wild, I would ignore it, I would not react it, I would just उसको खा लूंगा, उसको पी लूंगा और चीजें ठीक हो जाती है। कई बार उल्टा भी होता है जहाँ पे मैं बहुत अग्रेसिव होता हूँ या वाइल्ड होता हूँ, and Shilpa would try to do that. But yes, there are instances where we both are
at the same level, then things get out of control. So I think 90% of the time we try to see to it that when one is on fire, the other is water. But when that doesn't happen, things go out of control. But I think that understanding and that evolution has happened over a time, and it's only getting better with time, I think. Lately, we've had a formula: agree to disagree and close the matter. Rambad ilaj, actually, agree to disagree and solve the matter. Exactly a Rambad ilaj. So I guess everybody is satisfied with your answer, and obviously it was amazing. So moving forward with some relationship related question only. लोगों को ना ये जो स्पेस वाला फंडा होता है ना, ये समझ नहीं आता है. मतलब स्पेस मतलब ऐसे बोल देंगे कि यार बात ही मत करो, या फिर बहुत ही बात कर लो. व्हाट इज द स्पेस थिंग? मतलब ये एग्जैक्टली चीज क्या है? कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी स्पेस नहीं होनी चाहिए? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है एक. So see, when we mean space, what I mean is that each one of us are individual with our own soul, with our own objectives, with our own life, with our own body. हम individual, हमारा एक identity है. तो वो identity because हम relationship में है, वो identity loss नहीं होना चाहिए. So while we are together and we have certain aims and goals and responsibilities as a couple, but at the same time हमारा जो individual identity है वो loss नहीं होना चाहिए. तो when I say giving space, it means कि you do whatever is required as a couple and do your responsibilities, do whatever, but मेरा individual space है और मेरा individual identity और मेरा individual aspirations है, काम है, needs है, expectations है, वो मुझे काम करना होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं बंध जाऊं बिकॉज मैं रिलेशनशिप में हूं. अगर शिल्पा मुझे बांध दे कि ओके बिकॉज यू आर रिलेशनशिप, तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट्स नहीं होने चाहिए, तुम्हारे इंडिविजुअल प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए, तुमको वही करना है जो मैं चाह रही हूँ या जो फैमिली को चाहिए, तुम्हारा इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गया. या मैं शिल्पा से चाहता हूँ कि अभी तू मैरिज होगी, अभी तुमको सिर्फ घर में नौकरानी की तरह काम करना चाहिए, खुद का कैरियर पे नहीं सोचना चाहिए, खुद के लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए बिकॉज तुम्हारा रोल तो सिर्फ घर संभालना है. अगर मैं वो करूँ तो मैं इंडिविजुअलिटी को ही मार रहा हूँ. और अगर इंडिविजुअलिटी को मार लिया तो वो फिर वो फिजिकल बॉडी है जिससे मैंने शादी किया है, उसमें इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी और सोल का एस्पेक्ट ही नहीं है. तो when we mean by space, I would mean is that Venn diagram. There is a common area, but there is individual area, and let people or let your partner live their life in that individual space, and rather than trying to control it your way. That's my way of looking at it. I mean, just let them be. That's the only thing. I mean, when he decided, leave his business and join Sonam, I mean, one thing I could have done was, boss, family, you have family responsibilities, you need to earn money. How can you just do it? But I didn't do that. I was like, okay, you don't feel like working, fair enough. You can go and work with Sonam, and I supported him wholeheartedly, So I, or for that matter, none of us have ever become obstacle for the other person, we have never followed the societal norms and allowed individual to do what they wanted to do, like we have mostly done things against the norms, but at the same time between us it was always very natural, very normal. Whoever wants to do anything can do it, there is no problem. The other person is always supported wholeheartedly. So that's the thing about giving space. Okay, absolutely amazing. The best thing I can just take out of the answer was you did things against the norms of the society, and which takes lots and lots of courage. And it was highly appreciated, and obviously thank you for being such a great example. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आया है ऑडियंस की तरफ से कि वी यूजुअली यूथ में आजकल की सबसे बुरी एक चीज है, दैट इज लेजीनेस. और उस लेजीनेस की वजह से आता है प्रोक्रेस्टिनेशन. हम लोग चीजों को इतना टालते हैं कल की परसों की, एक महीने बाद, एंड वी डोंट डू इट. ओके, सो हाउ टू अवॉइड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? Actually get a solution of a procrastination. So again, the problem is not just of the youth but of the system. We are in a system where डिजिटल हमको फीड किया जाता है कि बस लाइफ डिजिटल है. हम ऐसे सिस्टम में जहाँ पे ये बताया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है कि कंजम्पशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा खाना पीना सोना मस्त कर रहना. अभी जब ये हमारे यूथ के माइंड में इतना ज्यादा भर दिया ये इकोनॉमी वर्ल्ड है कि उनको प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस बाय डिफॉल्ट आ रहा है. बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल लाइफ
I think it takes a lot more effort, lot more time, and initiative like this will happen. And when that realization comes that, it's my life, I need to take charge of it, take control of it, and drive it in a particular direction, and not get influenced by what is being told, bold, or sold, then they will find meaning to it. And if they are only getting influenced by what is, external, and not having their own meaning or purpose, they'll get into procrastination and not doing anything. And because of all these things, even the need to do action is lacking. Okay, The TV देख लिया excitement तो is not there, to do something. Lazily टीवी देखते देखते टाइम पास कर लो, कुछ भी कर लो, and वो टीवी देख के या वीडियो गेम खेल के एक्साइटमेंट मिल जाता है, and that's it. Rather than getting up, doing physical, and sweating or doing hard labors, or struggling, that is not there. That all thing is taken away by that video games and watching TV and Netflix and whatnot. And because all that happens, there is no excitement left in life, and that's all like, ठीक है, होता है, कल करूंगा, परसों करूंगा. So that's the whole thing. प्लस फैमिली में बहुत पैसा ऑलरेडी है, तो जरूरत भी क्या है, मेहनत करने का. तो वो एक, तो कई बार वो गुड पेरेंट है वर्सेस गुड पेरेंटिंग होता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड पेरेंट, यू विल गिव all the best material things to your children. But if you want to really do good parenting, you will not give the best material things. You will give him tools which are enabling him to make a meaningful and happy life. So I think this materialism versus non-materialism debate, we can go on. Again, We can talk yeah. for hours and hours on that. So true, so true. We can talk for hours. And moving forward with the next question is that कि आजकल का जो हमारा यूथ है ना, ये जैसे आपने बताया कि पैसे के पीछे भागना एंड ऑल स्टफ. सो आई जस्ट वांट टू नो कि अकॉर्डिंग टू यू गाइस, व्हाट आर द मेन थिंग जो बीच में आ रही है कि लोग अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपना थोड़ा सोशल कॉजेस की तरफ या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ध्यान देवे और उसको भी अपना टाइम डेडिकेट करे. बट क्या ऐसी चीजें जो उनको रोक रही है, एंड हाउ टू ओवरकम दैट थिंग, ताकि हम लोग भी उस चीज की तरफ आगे बढ़ सके. I would say competition, rat race. मतलब our society or culture or environment has become like okay, I have a bigger house, you have a smaller house, I am this much salary, you want this much salary, your car, right from the childhood, the kids and everybody are pushed into it. What rank you got, how much marks you got, what have you done, what is your son doing, and we got so much into that competition that everybody wants to become a winner. And in that process, we forget our own happiness. We forget that there's something beyond that also. And that's the reason I think people are not, able to contribute towards social causes. Because when you start working towards those causes, the first thing is, what are you going to get out of it? How will you compare yourself with your friends, your peers, or something like that? And that's the only thing, at least I feel, that is stopping the youth to, work towards social causes. And if I may add how to overcome it, then competition को overcome करने का एक ही तरीका, which is differentiation. How do you differentiate yourself with your unique abilities, unique skills, unique approaches, unique way of doing things, that you don't have to get into that competition? You can overcome that competition by jumping the competition if you have those unique skills and unique abilities. So differentiation पे काम करेंगे तो competition में रहने का जरूरत ही नहीं है. एक ये हो गया. दूसरा क्या करना चाहिए, देन जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, जो भी आपका एज है, 25 साल हो गए, 30 साल हो, उतना परसेंटेज आपका टाइम और एफर्ट कोई भी कॉज के लिए दीजिए. और वो ग्रेजुअली 50 साल के हो गए तो 50% दीजिए. when somebody does something like this, then I think gradually he will get into working on the causes, plus life का perspective, life का meaning, horizons बहुत broad हो सकते हैं. So ये दो तीन चीज once you start giving without expecting anything in return, you yourself will realize what fun it is, So then that competition and all of that will never really matter. That's great. Thank you so much for being such a great mentors. We really look up to you and we are really thankful to Sadhika Dr. Pragbaji Virat जिन्होंने ये opportunity दी कि हम लोग आपको इस तरीके से इतना informal and friendly तरीके से सुन सके. And thank you so much. We really feel motivated and inspired. Now I would like to pass the screen to Sadhika Dr. Pragbaji Virat. Thank you. Thanks a lot. जय हो दिलीप जी एंड जय हो शिल्पा जी. शिल्पा जी. एक्चुअली मैं अपने
सारे ऑडियंस के साथ, सभी लोगों के साथ, यूथ के साथ ये एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगी कि आज मैं भी दिलीप जी और शिल्पा जी से पहली बार ही इस स्क्रीन पर मिल रही हूँ। एंड आई वुड रियली शेयर दिस कि मुझे इनका फोन नंबर मिला और सिर्फ इतनी सी बात मुझे इनके बारे में पता चली, दिलीप जी के बारे में। आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट शिल्पा जी, और दिलीप जी के बारे में बस इतना ही पता चला कि आप लोग जिस तरह से हर काम को शिद्दत के साथ कर रहे हो, जिस तरह लॉजिकली व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस you are approaching, maybe in the field of religious activities, जैनिज्म के बारे में, आप दिलीप जी से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ एक लाइन सुनने को मिली, आप दिलीप जी से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड आई कॉल्ड दिलीप जी जिस इस एक लाइन के पीछे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दिलीप जी का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि अगर आप सोनम को अपने इस पर बुलाना चाहते हैं, सोनम वांगचुक को, तो आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर। एंड आई वाज लाइक, आई डिडंट गिव इट अ थॉट, और मैंने उनसे क्लियर कहा, नहीं मुझे तो आपसे बात करनी है एंड लेट्स कनेक्ट। बस इतनी सी बात हुई, मैंने इनको कुछ वीडियोस भेजे एंड ही सेंट अ स्मॉल वीडियो ऑफ शिल्पा जी एंड आई आस्क्ड हिम कि आप अपना प्रोफाइल भेजिए। मैंने शिल्पा जी का वो छोटा सा 1 मिनट का शायद वीडियो होगा जो आपको पुरस्कार मिला मंजू जी लोढ़ा के हाथों और रूमा देवी जी के हाथों, वो सुना एंड यू जस्ट स्ट्रक मी। फिर दिलीप जी का प्रोफाइल पढ़ा और एक ही चीज विच आई शेयर्ड विद हिम पर्सनली आल्सो, यू टुक लाइफ एज इट केम। हर मोमेंट पर आपको जीवन ने जो अपॉर्चुनिटीज दी, और वो अपॉर्चुनिटीज मिली आपकी बढ़ती हुई समझ के साथ। जैसे जैसे आप जीवन जी रहे हो, आपकी समझ ग्रो हो रही है, एंड ये ग्रोथ ही सच्ची सक्सेस है। वंस यू आर स्टैग्नेंट, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। When you're growing with the life, you are really successful, and that is what success is for me. And I was just amazed, I just loved it. और मैंने आपसे बात की because we had मंजू जी and मंगल प्रभात जी लोढ़ा for our September couple edition, and I was just looking for such a couple जो कहीं ना कहीं हमको क्लिक करे। जैसे ही I didn't say anything to the youth Charammangal, I just passed on your profile and your video, and with all enthusiasm they just wanted you, and today listening to you it was great। जो कॉन्सेप्ट्स हमने आपसे सुने अहिंसा के बारे में, अपरिग्रह के बारे में, yes you said that you don't know the ritualistic concepts of Jainism, but the way you are living to those concepts of Jainism in your day-to-day life, they are just amazing। And the whole youth, I suppose in one word, क्योंकि मेरे पास लगातार messages आ रहे हैं WhatsApp पर, they would love to be connected with you ever and always as their young mentors, and yes, very fun loving and energetic mentors. So they would really love to get connected, and it was great listening to you. Thank you so much for being connected with us, and thanks to the whole Virat Youth Charammangal team so organizing such sessions very nicely. Thank you so much. Over to Tanvangi. Thanks a lot for inviting us, and giving us an opportunity to see. Yes, Shilpa ji, I told you personally also. आप दोनों को देखकर रियली जिस तरह से आपने एक कपल को डिफाइन किया है, वो जो कपलिंग है ना, द वैन सर्कल यू जस्ट टोल्ड अबाउट, वो जो कपलिंग है ना, पूरी बड़ी बड़ी मशीनरी में इतनी सी कपलिंग कितनी काम देती है, वो जो कपलिंग आप लोगों में दिखाई देती है ना, इट्स रियली एनर्जेटिक, इट्स रियली एंथुसियास्टिक, एंड यस वी एंजॉयड ईच एंड एवरी आंसर। क्योंकि जिंदगी में जब तक लाइवलीनेस है, then only you can share it with others. Thanks once again. Over to Thanks a Tanvi. lot. Our pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. I would like to invite our pioneer speaker, Vice Admiral DSP Verma, sir, if he has any words to say. Jai Ho. Admiral Verma, sir, are you connected? Thank you, sir. Jai Ho. What can I say after such a lovely,
evening. I think this is one of the best talks I've heard since the beginning of this particular episodes. What what is it that the kids did not get today? Happiness. I was smiling throughout, and Dilip ji, I'm also young like you, and what was so thing was what enchanting answers that were given. I think basically I am bowled over. I wish I can join Dilip ji in his endeavors sometime. You hit the nail on the head. Consumption has ruined us. We have to get out of consumption, and when we consume, we should ensure that we give back to nature what we are taking from them. And as far as Shilpa ji is concerned, ma'am, I love your smile, and I'm sure it's infectious, and that's why I can see Dilip ji always smiling too. You are a beacon for these youngsters who are there in the youth Charammangal. I don't want to go on and on because I'm so impressed, but all that I can say is thank you for coming here. And I also, like you, I'm so happy to be connected with you, Charammangal. Thank you. Jai Ho. Thank you, Thank sir. you. Thank you for your kind words, sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Vavshiji Maharaj sir for Mangal part, and then I'll conclude after that. जय हो। आज के इस टॉक से सबने बहुत इंस्पिरेशंस ली है और धर्म को जीवन में कैसे जीना वो सीखा है कि धर्म करने की चीज नहीं है, वो जिंदगी के जीने का एक तरीका है। अगर जीने का तरीका हमारा सुखपूर्ण है, स्वास्थ्यपूर्ण है, प्रसन्नमय है, तो हम ऑटोमेटिकली वो धर्म के सारे रूल्स प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में खुद ब खुद घटित हो जाते हैं। आपको दिलीप जी को, शिल्पा जी को बहुत बहुत साधुवाद और विराट यूथ चरमंगल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छे से ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और जो भी लोग कनेक्टेड है उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। वर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मस्त चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवली पन्नतम धमम शरणं पवच्छामि। आप फूलों फलों को जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो जय हो जय हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच महाराज साहब आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। Now, thank you so much. A big thanks to Dilip ji and Shilpa ji for connecting with us. ये कहने को कपल एडिशन था, बट हमें एक होलिस्टिक व्यू मिला अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग इन लाइफ, जस्ट नॉट अबाउट रिलेशन, अबाउट करियर, अबाउट environment. We learned so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So any last words you want to say to us, any last regards you want to say to us for now? Stay happy, keep smiling.
and it's just one life that you have, which you know you have, so make the best out of it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. We hope that we stay connected with you Sure, sure. afterwards as well, and we keep drawing inspiration from you because it has motivated us so much. uh, I would also like to thank Group Captain Ashok Charadia sir for connecting with us. I would like to thank Praful Talera uncle for connecting with us right now as well. And I would like to thank Pragba ji and Vivashri ji Marasa for constantly blessing us and managing our thoughts perfectly. I would also like to thank Garima and Sayali for the introduction today. I would like to thank the core committee and the volunteer group for their constant support. If you want to connect with Youth Charammangal, follow us on Instagram and Facebook. On Instagram, we are now posting a series that is every Monday we are trying to post motivational quotes, and we are posting small videos of our previous speakers so you can get inspiration daily from them. Stay connected with us on Instagram at the rate Youth Charamangal and at the rate Youth Charamangal on Facebook as well. You can connect with us through WhatsApp if you're added on that group. If you want to volunteer with us, you can message us as well. And now I would like to tell you about the next Virat Talks. It's a mystery, but we are talking mainly about maritime culture and Bollywood culture, two different topics, but they are really interesting. We'll reveal the speakers soon. And now I would like to pass to Pranav for the prayer. Thank you so much. जय हो। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर साज मिला, दाने उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, बढ़िया हमदम रहे, सभ्यों में शान हो, प्यारा पड़ोस हो, परिजन को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। सब में सद्भाव हो, प्रेमी स्वभाव हो, दिल में भाई सखा के बढ़ बढ़ के प्यार हो, सबके कल्याण के भावों को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। Thank you so much, Pranav. I would like to pass on the mic to Sadhika Pragbaji. Thank you so much. So much. Thank you, everyone. Thank you, Virat Youth Charammangal, and all the audience connected on YouTube and on Zoom. Yes, Tanvangi told it is a mystery for our next episode, Virat Talks episode 5. But let me unveil you half of it. So one of the speakers, we have Professor Atul Mishra, who was a nuclear scientist working in Bhabha Atomic Research Center, but right now he is in Goa and he gave up his job to pursue his passion for music. So let's hear him on the soft power of Bollywood, which influences our youth. So Bollywood culture ने हमारे youth को बहुत influence किया है, लेकिन अब किस तरह से influence करेगा आज के बाद, ये हमारा youth खुद decide करे, और ये जानेंगे हम अतुल जी मिश्रा के साथ. He's a fantastic singer and an
encyclopedia of Bollywood songs. Not only does he sing, he is a guitarist. He knows the film, the lyricists, the musician, the instruments, each and everything. So wait for the next episode 5, Virat Talks. And yes, the other speaker is a big mystery. Let the mystery unfold on the next episode itself. But जैसा मैंने कल भी कहा, it would be on our maritime culture, the richest maritime culture. और वो सुनने के बाद जितना हम खुद पर आज प्राउड फील करते हैं being an Indian, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाने वाला है. Thank you everyone. जय हो, कल्याण हो.